हेलो, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द फ्लक्सेस एंड द इक्वेशंस ऑफ द चेंज, जो कि ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लक्सेस के एंड द इक्वेशन ऑफ चेंज इसके बारे में। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, देन द फिक्स लॉ जो कि हमारा मास बैलेंस पे बेस्ड है। बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानेंगे कि कंटिन्यूटी की इक्वेशन कैसी होती है। ठीक है, then the equation of motion in terms of this tau, ठीक है, then the equation of motion in terms of for the Newtonian fluid, जिसमें कि हम constant density और constant viscosity दोनों लेते हैं। ठीक है, फैन ऑफ कर झाला जिसमें कि हम constant density एंड विस्कोसिटी दोनों देते हैं। ठीक है, नाउ द डिसिपेशन फंक्शन ऑफ फाई वी फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आएगा। देन द इक्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानेंगे इन द टर्म्स ऑफ क्यू। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड सेम वी हैव डन प्रीवियसली राइट फॉर रो एंड म्यू, उसी के लिए फिर से करेंगे। देन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द स्पेसिस इन टर्म्स ऑफ j, that will be for the mass transfer, and followed by last but not the least the equation of continuity for species A in terms of omega A for constant rho dAB, that is the diffusivity। ठीक है, so without any wasting the time हम start करते हैं हमारे अगले फर्स्ट नंबर के टॉपिक से। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ हम अभी देख रहे हैं फॉर द इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी में हम जो फ्लक्स है टाउ, ठीक है, तो ये उसकी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, जैसे कि माइनस म्यू, जैसे हमने अभी तक डिस्कस करते आए। ठीक है, सो फॉर दिस वी विल सी फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई जेड, देन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड जेड, एंड फॉर द स्फेरिकल दैट इज अ थीटा फाई एंड आर। ठीक है, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास होगा, यहां पर देखते हैं, ओके, एनीवे सी, सो वी कैन सी इसमें होता है टाउ एक्स, ठीक है, देन द टाउ वाई वाई, टाउ जेड जेड। हाउ वी डिफाइन दिस, इसको डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, टाउ एक्सेस क्या होता है, दैट इज अ मोमेंटम, दैट इज अ एक्स मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। टाउ सी, टाउ वाई एक्स क्या होता है, दैट इज द एक्स मोमेंटम इन अ वाई डायरेक्शन। सिमिलरली टाउ जेड एक्स क्या होता है, एक्स मोमेंटम इन अ जेड डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ वे में टाउ वाई वाई, टाउ एक्स वाई एंड टाउ जेड वाई, राइट। टाउ जेड वाई क्या हो जाएगा हमारा, मोमेंट वाई मोमेंटम इन द जेड डायरेक्शन, सिंपल। सी, इस इक्वेशन को हम जैसे ही इसमें डिराइव करेंगे बाय पुटिंग द दिस फॉर्मूला लाइक फॉर डेल एंड डूइंग दिस डाइवर्जेंस, वी गेट टाउ एक्स एक्स इक्वेशन फॉर दिस, राइट। सी हाउ वी गॉट दिस, डेल वी एंड डेल वी ट्रांसपोज। डेल वी क्या होता है इसमें, सी डेल वी हमारे पास होता है, आई एम शोइंग हियर, डेल वी क्या होता है हमारे पास, ये होता है डो वी एक्स अपॉन डो एक्स। ठीक है ना, डो एक्स अगर हम y के टर्म्स में अगर ले, ठीक है, तो फिर डो वी एक्स अपॉन डो वाई होता है, और इसका ट्रांसपोज अगर ले तो y ऊपर x नीचे, सिमिलर। ठीक है, सो टाउ एक्स एक्स, टाउ वाई वाई, टाउ जेड जेड, ठीक है, इन तीनों के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, देन द टाउ एक्स वाई, टाउ वाई जेड एंड टाउ जेड एक्स, एज आई टोल्ड यू, सारे मोमेंटम फ्लक्स इन ऑल थ्री डायरेक्शन। ठीक है, थ्री मोमेंटम फ्लक्स हो गए इन द थ्री डायरेक्शन, मतलब हमारे पास टोटल 9 इक्वेशंस बनेगी फॉर द मोमेंटम फ्लक्स। ठीक है, नाउ वी आर सीइंग हियर दिस इज द डाइवर्जेंस, राइट। डेल डॉट वी क्या है, डेल वी डेल बाय डेल एक्स ऑफ वी एक्स, डेल बाय डेल वाई ऑफ डेल्टा बाय डेल वाई ऑफ वी वाई प्लस डेल्टा बाय डेल जेड ऑफ वी जेड, राइट।
Now नाउ मूविंग टू दिस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास डायमेंशंस क्या क्या होते हैं? आर, थीटा एंड जेड. व्हाट वी हैव डायमेंशंस? आर, थीटा एंड जेड. ठीक है. इन अ सिमिलर वे जैसे हमने मोमेंटम फ्लक्स देखा था फॉर द आर मोमेंटम, थीटा मोमेंटम, जेड मोमेंटम, ही इस केस में देखेंगे फॉर ऑल थ्री. इसी में भी सिमिलरली 9 इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे फ्रॉम द गिवन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी. राइट. See, here is a tau r, tau theta theta, tau z z, tau r theta, tau theta z, tau z r. Okay. And for the divergence हम इस तरीके से इसे लिखेंगे. For divergence के लिए 1 upon r del by del r of r v r plus 1 upon r del v theta upon del theta and dou v z upon dou z. ठीक है. del dot v क्या होगा? 1 upon r dou by dou r of r v r plus 1 upon r dou by dou theta of v theta and dou by dou z of v z. राइट. इसके बारे में हम जिसका जो डेरिवेशन है हम अभी नेक्स्ट क्लिप में यहाँ पे हम उसे देखेंगे. ठीक है. नाउ वी आर सीइंग अबाउट दिस डेरिवेशन. राइट. लेट्स सी द हाउ वी डिराइव दिस. वी विल डिराइव फॉर दिस टू. राइट. or we can derive for any three equations from which others can be easily derived. I will tell for the three equations derivation. Right. So now let us see about the spherical coordinates. Spherical coordinates में हमारे पास क्या होता है? That is the r, theta and z. Right. इसमें क्या होता है हमारे पास? r, theta and sorry, it's a r, theta and phi. Right. Spherical coordinate इसमें हमारे पास क्या होता है? r, theta and phi. इसमें हमारे पास तीन डायमेंशंस होते हैं. Right. This is a r जो इस डायरेक्शन में घूमेगा. Then it is a theta जो कि इस डायरेक्शन में घूमेगा. And there is a phi. This will be moving in the this direction. That will be cover whole sphere. Right. हमारा sphere कैसे बनेगा? In three dimensions से बनेगा. Right. Now in a similar way जैसे कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी से हम उसे डिराइव कर रहे हैं. In a similar way we will do for the tau r r, tau theta theta, tau phi phi, then the tau r theta, tau theta phi, tau phi r, and this the divergence formula del dot v. इसमें क्या होता है? 1 upon r square dou by dou r of r square v r plus 1 upon r sin theta of dou by dou theta of v theta sin theta plus 1 upon r sin theta dou v phi upon dou phi. Right. Now let us see about the Fourier's law जिसमें कि हम हीट कंडक्शन के बारे में बात करेंगे. Fourier's laws of heat conduction. अभी हम बात कर रहे हैं फोरियर्स लॉज ऑफ हीट कंडक्शन जिसमें कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट वी कैन इजीली सी Q is equals to minus K del T. What is del T? That is a delta T by del X. As we have seen the definition for the del, we know what is the definition for the del as we have seen previously. ठीक है. उसी definition को यूज करके हम यहाँ पे Q is equals to minus K delta K del T. राइट. इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे. राइट. नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इस इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इन अ सिमिलर वे. देखिए अभी तक अपन ने इसके पहले क्या देखा था? सी इसके पहले हमने क्या देखा था? दिस द फ्लक्स, दिस इज द मोमेंटम, लाइक दिस वी आर डूइंग फॉर द मोमेंटम. राइट. नाउ व्हाट वी आर डूइंग? नाउ वी आर डूइंग फॉर द हीट ट्रांसफर. ठीक है. हीट ट्रांसफर के लिए हम देखेंगे. उसके बाद इज फॉलो बाय द मास ट्रांसफर. ठीक है. हम हीट ट्रांसफर में क्या देख रहे हैं? इन अ सिमिलर वे तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तीनों के लिए हम 9 इक्वेशंस टोटल इसमें देखेंगे. राइट. सी दिस द फर्स्ट वन इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट.
ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई एंड जेड, दैट इज द क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड। ठीक है, क्यू एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के डो बाय डो एक्स ऑफ टी, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस के डो बाय डो वाई ऑफ टी, क्यू जेड क्या हो जाएगा, माइनस के डो बाय डो जेड ऑफ टी, राइट। लेट अस फास्टली सी फॉर द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमें अभी देखा था कि r थीटा एंड z डायमेंशंस होते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे भी उसी तरह लिखेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू थीटा एंड क्यू जेड। देखिए जैसे हमने न्यूटन्स लॉज में न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी का जो मेन फॉर्मूला था वो देखा था, और उसी को डिराइव करके हमने सिलिंड्रिकल, कार्टेशियन और स्फेरिकल तीनों में उसके डेरिवेशंस किए थे उसी इक्वेशन से। सिमिलर वे में हमने यहाँ पे फोरियर लॉ की इक्वेशन देखी थी। क्या देखी थी हमने इक्वेशन, Q इज इक्वल टू माइनस के डेल टी। इसी इक्वेशन को डिराइव करके इन ऑल दिस cylindrical coordinate system, then Cartesian coordinate system and spherical coordinate system, तीनों में हमने similar way से three equations, right? This is the r rate of heat transfer, this is the r rate of theta rate of heat transfer, this is the z rate of heat transfer, right? So हमने ये यहाँ पर यूज किया है, right? सो चीजें कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे को, जैसे हमने पहले किस में किया था, मोमेंटम में किया था, अभी किस में कनेक्ट कर रहे हैं उसे, फॉर द हीट। इन अ सिमिलर वे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन है कि इसमें वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी का क्या सीन है, वेलोसिटी एक्स में वेरी कर सकती है, वाई में भी वेरी कर सकती है, जेड में भी वेरी कर सकती है, लेकिन टेम्परेचर और मास के केस में ऐसा कभी नहीं होता। टेम्परेचर और मास के केस में हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के केस में हम वो कॉन्सेंट्रेशन किसी डायरेक्शन में वेरी नहीं करता है, ठीक है। जैसे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट होता है, वैसे यहाँ पे टेम्परेचर के कंपोनेंट्स नहीं होते, राइट। इसमें टेम्परेचर हमारा हर बार कांस्टेंट है। यहाँ पे लिखा है टी एक्स टी वाई टी जेड, नहीं लिखा है। सी एक्स सी वाई सी जेड हम लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। डायरेक्टली हम लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डो आर, क्यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन आर डो बाय डो थीटा ऑफ टी, क्यू जेड इक्वल टू माइनस के डो बाय डो जेड ऑफ टी, सिंपल, राइट। इन अ सिमिलर वे हम यहां से बढ़ेंगे फॉर द स्फेरिकल के लिए, ठीक है। ओके, मैं इसे मिटा ही देता हूं, राइट। सी दिस इज फॉर द स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल के लिए एज आई हैव सेड यू दैट कि आर थीटा एंड फाई, इसमें तीन डायमेंशंस हो गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, स्फीयर होता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, आर। यहाँ ये जो है यहाँ से हमारा एंगल इस तरीके से ऐसे मूव करेंगे, ऐसे वो किस में करेगा, थीटा में। एंड जब ऐसा मूव करेगा लाइक ये ऐसा अराउंड दिस, व्हेन वी मूव लाइक दिस इट विल बी लाइक अ फाई एंगल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से मूव करेगा मतलब किस में कर रहे हैं, थीटा में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे मूव करेगा मतलब किस में कर रहे हैं, आर में मूव कर रहे हैं। इन द सेंस ऑफ फाइनली हमारे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे स्फीयर मिलना चाहिए, राइट, यस। सो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या है, क्यू आर, क्यू थीटा एंड क्यू फाई। इन तीनों के इक्वेशंस यहाँ पे लिखे गए। ये सारे इक्वेशंस यही से डिराइव हुए फ्रॉम द मेन इक्वेशन, दैट इज क्यू इज इक्वल टू माइनस के डेल टी। आपको इसके इन में यहाँ पे मैं आपको इसका डेरिवेटिव करके बताऊंगा कि कैसे हम एक बार हम क्यू आर का करेंगे, क्यू थीटा का करेंगे और क्यू जेड का करेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट में। दैट मींस यू विल बी लाइक, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने इस इक्वेशन से, ये मेन इक्वेशन से इस पे हम डिराइव हुए है, राइट, यस। सी गाइस, अभी तक हमने क्या कर लिया, मोमेंटम कर लिया, हीट कर लिया, अब हम कर रहे हैं मास, ठीक है। मास के बारे में क्या होता है, रेट ऑफ दिस मास फ्लक्स, राइट। हमने मोमेंटम फ्लक्स देख लिया, हीट फ्लक्स देख लिया, अब मास फ्लक्स की बारी है, ठीक है। मास फ्लक्स में जैसे हमारे पास न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी था, फोरियर्स लॉ था, उसी तरीके से हमारे पास ये फिक्स लॉ है। क्या है हमारे पास, ये फिक्स लॉ है। चीजें कनेक्ट हो रही है, ठीक है। फोरियर्स लॉ देखा था मोमेंटम में, फिर हमने हीट के केस में फोरियर्स लॉ देखा था, ठीक है। और नाउ फिक्स लॉ देख रहे हैं इन द केस ऑफ मास। चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, ये चीजें कनेक्ट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को लेके हम सारी इक्वेशंस फॉर ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स डिराइव करेंगे,
राइट. सो फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है जे ए एक्स, जे ए वाई एंड जे ए जेड. दैट इज गिवन एज माइनस रो डी ए बी डी डब्ल्यू ए अपॉन डी एक्स ए. दैट इज अ वेट. डी डब्ल्यू ए अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू ए अपॉन डी वाई, डी डब्ल्यू ए अपॉन डी जेड. हम वेट के टर्म्स में यहाँ पे ले रहे मास फ्लो रेट है. ठीक है. मीन्स मास का जो है रेट ऑफ मास, राइट, मीन्स रेट ऑफ दिस मास फ्लक्स x, like in a x direction this is the rate of mass flux, in a y direction this is the y rate of mass flux, this is the z mass flux, right? Yes. Now in a similar way सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, अब इसके ऑनवर्ड्स मेरा फ्रेंड, माय बैचमेट, माय ग्रुपमेट अमय विल डिस्कस, राइट? थैंक यू. Okay, so now let's get started with the continuity equation, and we were discussing about the Cartesian coordinates. I explained, I kind of told you from where this came from. So okay, so now talking about this, the continuity equation in the cylindrical coordinate helps us to track down how mass is conserved when fluid flow radially around and along a cylindrical path. The 1 by r terms, that is this, the 1 by r term basically means terms arise due to the geometry, and they are what distinguish from the Cartesian from. All right, and like from an engineer's point of view, when you are like solving any situation related to flow through pipes, they or jet flows, this can also even predict how an oil spill might evolve due to ruptured or underseized pipe. So okay, talking about the Cartesian coordinates, the Cartesian coordinates are generally deprived with dou p by dou t plus dou by dou x into rho vx plus dou y into rho vy plus dou z upon rho vz. So this each term after dou by dou p by dou t generally represents mass flow rate. All right, this basically. So it is common for every equation, but this, let me just write this more clearly. Alright. Generally, this equation, what does dou p by dou t here? What does it means? It means mass flow rate and it is common for every direction x, y, and z. So basically, this kept common and we added this in every direction. Alright. So Cartesian coordinates assume a simple cube or box-like geometry, and it works best when the flow has no curved surfaces. Like it should not have any kind of curved surfaces, or the efficiency might get hampered. Now let's talk about the cylindrical coordinates, that is r, theta, and z. Now what is this r, theta, and z direction? Generally in cylindrical coordinates we deprive with this three terms as r, theta, and z. So in this equation, that is dou p by dou t plus 1 by r into dou by dou r into prv t plus 1 by r into dou by dou theta into pv theta plus dou by dou z into pvz equals 0. Okay, this is used when problem involves pipes, nozzles, tanks, or any kind of miniature nozzles or tanks, anything that is circular or tubular. Basically it can also be deprived with, let me give you an example.
cylindrical coordinates of r, theta and z can also be explained with this kind of geometry. Actually, r, theta and z can also be explained with this kind of geometry. Okay, so what the cylindrical coordinates of r, theta and z tells us? So it generally means we are okay. Let me just tell you the terms. What are those? We are okay. So this is VR. I pronounce it as VT, but this is VR actually. Okay, so VR is something that is radial velocity. Pardon for my handwriting. Like similarly, VR, V theta, VZ is something what we call as radial velocity, and the V theta is angular velocity, and Vz is something that we known to be as velocity along the length of the cylinder. The velocity that is along the length of the cylinder. Okay. Uh, all right. So this is all about cylindrical coordinates. So like what are the special terms that we can see here in the cylindrical coordinates? The 1 by r terms correct for is corrects basically for let me just write this more clearly for you guys. Okay, see, 1 by r theta term generally represents or corrects for the curvature in circular geometry. This is for curvature in circular geometry. Alright, and this 1 by r is common for every coordinate possible. For 1 by r we consider it for theta, 1 by r into dou theta, that is for theta, 1 by r into dou z. It is not written, but it is generally considered over here. Okay, so now talking about the spherical coordinates, that is r, theta and phi. So what are this r, theta and phi? Basically, spherical coordinates are for something of fully developed flow, for generally 3D flow. From here, this 2 we were carrying it for 1D flow, but from spherical coordinates, it is totally for fully developed flow, 1D flow, fully developed or flows with incompressible flows, flows, or generally we can also ensure it with something as 3D radial flow. From like in previous cases in cylindrical coordinates and Cartesian coordinates, we were just like gambling with radial flow, but things get different in spherical coordinates as we are now playing with the 3D radial flow. So what does this 3D radial flow means to us? Like what is its use? So let's deep dive into it. So basically the 3D radial flow the spherical coordinates r, theta and phi goes as dou p by dou t plus 1 by r square dou by dou r into rho r square into vr plus 1 by r sin theta into dou by dou theta rho v theta sin theta plus 1 by r sin theta into dou by dou phi. Okay, so this vr is something that we will call like consider as radial flow. All right, this v theta is something that is polar direction flow, and this v phi is longitudinal.
All right. Okay. So longitudinal flow. These are the directions basically. This is radial direction flow, polar direction flow, and longitudinal direction flow. All right. So in this special terms, the 1 by r and the sine theta term here, in this the 1 by r and the sine theta, this 1 by r and this sine theta, basically what does this means actually, like what significance do they carry, is the correct term for spherical cell geometry, like that area increases as r square, not linearly but like in cylindrical. All right. And what are the, like, what application can be like deprived from these things, are something in bigger industries there are storages for petroleum. If you have been ever in the outskirts of the railway station, we can always see big tanks which actually hold raw petroleum or raw crude, which is generally transported by the means of railways. So basically this term can be used into that. That means okay, मेरा इधर mistake. Okay. Okay, so we were talking about its application. Spherical coordinates does actually carry some applications, like it is like used for oil leaks, which spread spherically through sea ruptures. The Maragoni effect, which we have already learnt in another subject, is something which flows in with this phenomenon. All right. And it basically affect deep sea ruptures. And another very effective applications of it goes to be as air and heat deprivation points from the sources, and etc. There are many actually, which anything that flows in 3D radial kind of situation do carry the spherical coordinates of r, theta, and phi. All right. Now we're talking about the equation of motion in terms of tau. Okay, so we were talking about this. That is, wait a minute. So we were talking about equation of motion in terms of tau. All right. So what like now let's get into this and talk about what this means actually. Okay, so the equation that you are looking here right now, that is rho dv by dt is equal to minus del p minus del into tau plus rho g. All right. So what is this basically? This is the generalized momentum balance for Navier-Stokes equation. Okay. So we were talking about this generalized equation for momentum balance. That is for the equation of motion in terms of tau. So this is the equation for momentum balance. That is the generalized equation for momentum balance is rho to dv by dt is equal to minus del p minus del into tau plus rho g. So what is this basically? The LHS of this equation gives us the change of momentum in fluid particles, and the RHS is the net forces, that is pressure plus viscous forces. So let's look out for this Cartesian coordinates, that is the XYZ coordinates. So this look here clearly. This Cartesian coordinates basically are something. Each velocity component is analyzed separately. Here, how it's derived basically, we'll see about that. We'll break the vector Navier-Stokes equation into a scalar form, then apply Newton's law, that is F is equal to ma. F is equal to ma.
All right, we'll apply this Newton's law in order to a small fluid element in each direction. That includes body force, that is gravity, pressure force, and viscous forces. So, like, okay, this is what I told you is from above. It's kind of shallow. So, what it actually tells you, it shows how velocity in each direction changes due to pressure gradient, due to viscous streams tau and gravity. Okay, so this is something that tells you how it will change in the terms of in the terms of pressure forces, gravity, like pressure gradient and viscous streams tau. All right. Okay. So now getting started with the next thing, that is cylindrical coordinates, that is r, theta and z. So like what now we'll see what does the r, theta and z, that is the cylindrical coordinates, means to us. Basically it generally means that pipe flow or symmetrical type of problems, pipe flow or flow through pipes or symmetrical kind of problem are dealt with the cylindrical coordinates of r, theta, z. Like how it derived, basically let me tell you that. We'll start from the control volume in cylindrical like coordinates, and apply momentum balance in radial, angular and axial directions. So account of geometry, that is the 1 by r. Okay, see this 1 by r is something that is curved surfaces. So what does this generally tells you? It basically tells you the describes fluid motion in systems with radial symmetry like pipes and nozzles, and additional terms like v naught square by r over here. Where it is? Yeah, naught square by r. Okay, so this this term v naught square, v theta. Okay. And the terms of additional terms like v theta square by r generally tells us that is appeared due to curvature or rotation. All right. So we follow this three equation for cylindrical coordinates. So moving further, we'll talk about the spherical coordinates. What are the spherical coordinates? Spherical coordinates, again, those are derived with r, theta and phi. Alright, so r, theta and phi, this are generally used in problems like flow around a sphere or a fluid between spherical arteries, okay, or spherical tanks. So basically how these equations are derived? Okay, how these equations are derived is first we'll apply momentum balance in spherical geometry, and more complex due to double curvature in both angular coordinates, includes the v phi square and v theta by v phi and cot theta, etc. This basically it deprived with this equation like cot theta, v theta plus v phi square, this kind of terms. Now what does this tells you actually? Like velocity and pressure changes for this system are full in 3D symmetry, like spheres or bubbles. Extra terms that handle the geometrical distortion is like the radial angle or the directions. So like this all equations, cylindrical, then spherical and the Cartesian. These equations are derived by applying Newton's second law to a fluid element, accounting for pressure forces, viscous forces via stress tensor and gravity. Each coordinate system adapts the form based on its geometry. Cartesian for general cases,
cylindrical for pipes, and spherical for symmetric flows like around droplets or bubbles. Alright, so now we'll start for equation of motion for Newtonian fluid with constant rho and mu. Okay. Okay, so now you are like watching this. If now you are looking at this, this is the rho dy rho dv by dt is equal to minus del p plus mu del square v plus rho g. This is the basically equation for conservation in Navier-Stokes form, like in Navier-Stokes form basically. So we'll look out for this Cartesian form, which is also known to be the like force balance equation for each x, y, and z direction. So what does this means actually? Where if you are looking at this equation, okay, this is for x, y, and z. Sorry for that. X, y, and z form. This is the same as inertia is equal to pressure plus viscosity plus body force. All right. So like let's like see each part. First we'll deal with the x part. What does this means? Y part and z part. So this x part generally means rho into dou vx at dou t plus vx. This whole equation means conservation at x direction. This means conservation at y, and this is z. So what can we say? The LHS generally means rate of momentum change, that is unsteady plus convective terms. The RHS is something pressure gradient plus viscosity dissipation plus gravity, and the viscous term is in the Laplacian of velocity, that is del square into v. It models momentum diffusion and gravity, and here basically gravity acts as a body force in each direction, that is rho g x, rho g y, and then rho g z. Alright, so talking about the next one. Okay, what now we'll talk about the cylindrical coordinates, that is in r, theta, and z. So what are these equations now? These are also the Navier-Stokes momentum equation written in cylindrical form, that is r, theta, and in z form, and spherical. And later on you'll also see the r, theta, and phi, which are the spherical coordinates. Now what do they actually mean to us? They describe how momentum basically the fluid motion changes due to inertia, pressure, and gravity. Alright, so and like why are these three equations are important to us? Like what they add basically. This first radial r, second angular is theta, and third is z, that is phi. So like yeah, let me tell you that how are these equations were derived. Like looking at the basic idea, it also came from the Newton's second law, that is F is equal to ma. Alright, so these three equations generally are derived from this, like applied to small fluid element. So and it is expressed in the terms of chosen coordinate system, like cylindrical or spherical, and it used conservation of momentum plus differential geometry. And this viscous terms from Newton's laws of viscosity and pressure forces terms, like this adds the terms from Newton's laws of viscosity and pressure force terms. And do they really look complex? Actually no. Here it is just basic derivatives. That means because coordinate system is like in cylindrical or spherical curvatures, you get extra terms involving the r and the sine theta.
All right, and the bottom line is they are just Newton's laws of fluid. They are just obeying the Newton's law for fluid in different shapes, like pipes, reactors. You use them in CFD or when analyzing the flow in non-Cartesian geometries. All right. On. On it. ठीक है. Now we'll look out for the spherical coordinates overview, that is r, theta and phi. In spherical coordinates, any point in 3D space is defined by r, theta and phi, where r is the radial distance or from the origin, theta is the polar angle and phi is the like angle from the z axis, like longitude. Let this be specifically, it is longitude. And this system is basically used with spherical symmetry, like a flow with around a sphere, droplet evaporation, planetary atmosphere motions, and flames and combustion zones. Like here also, Navier-Stokes in equation is used in spherical coordinates. These are the three momentum equation, one for each direction. That is r, theta, and phi. That accounts for accounts for how the radial velocity changes, includes pressure gradient dou p by dou r, and contains centrifugal terms like v theta square and v phi square from the curved motion. This viscous force are spread using the Laplacian in spherical form. That is why like you can see the Laplacian here in like spherical form kinda. And polar momentum equation, that is in theta direction, describes how fluid moves up and down along theta direction, like moving from north pole to the equator. This also involves dou p by dou theta and geometric terms involving cot theta. Alright, like appears due to the spherical geometry. Also includes the interaction between r, theta, and phi components. The last equation, that is the phi equation, in phi direction governs the fluid momentum around the axis, longitudinal like motion, and includes dou p by dou phi and terms in denominators due to geometry. And this is used often in swirling motion or swirling forces or combustion systems. Swirling, if you have already seen a flow, like the classic example of mass transfer is something when you add sugar into the water or into a liquid, we basically mix it, we basically swirl it. So this basically is the classic examples equation that we are like diving deep into actually.